All right, welcome everyone. मेरे साथ है मिस्टर सौरभ सुल्तानिया एंड वी आर एज ऑडियंस भी दिखा रही है हमारी बहुत सारे लोग इस सेशन पे सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय. वी आर डूइंग दिस लाइव, सो ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज कि दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. प्लीज डू पुट डाउन ऑल योर क्वेश्चंस इन द चैट. What we are going to discuss is there is a slew of changes that has come across. Regulatory changes आ रहे हैं, हमारा mature हो रहा है market, तो ऑफ कोर्स उसके साथ साथ रेगुलेशंस मैच्योर हो रहे हैं एंड वी आर अकॉर्डिंगली गेटिंग इनटू अ न्यू एरा. अब जो करंट सेट ऑफ रेगुलेशंस नए आए हैं, सर्कुलर्स आए हैं, वो डिकोड करेंगे एंड उनका क्या इम्पैक्ट है वो डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट को इन रेगुलेशंस के साथ जक्सटापोज जब आप करते हैं, साथ में देखते हैं, तो हाउ कैन यू बेस्ट यूटिलाइज आर फीचर्स, जो ऑफरिंग्स हमारे पास हैं उनको आप कैसे बेस्ट मैचअप कर सकते हैं आपके एडवांटेज के लिए. दैट आल्सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स बिगिन द सेशन. सर, सबसे पहले आई थिंक द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन इज कि लॉट साइज चेंज हो रहा है. अब लॉट साइज चेंज होने में हम लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम टू एंगल्स. वी हैव बायर्स इन द मार्केट ऑफ कोर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. तो पहले आई थिंक सेलर्स को डिस्कस करते हैं, देन वील गो ऑन टू बायर्स. तो सेलर्स को क्या इम्पैक्ट होने वाला है? Yeah, hi, Vishu. Thanks. So I think everybody knows about it, the change, right? There are two critical changes which are happening. एक तो Nifty, now Nifty will become the center stage. पहले क्या था? Bank Nifty was the hero, right? I mean, in fact, NSE के अंदर भी आप देखें तो 60% वॉल्यूम्स Bank Nifty में हो रहे थे. But Bank Nifty की अभी मंथली एक्सपायरी रह गई है, वीकली एक्सपायरी रह नहीं गई है, right? So last week में definitely लोग Bank Nifty में भी करेंगे ट्रेड, but otherwise you're going to do weekly options in Nifty. तो निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 25 का 75 हो गया. आई थिंक दैट एवरीबडी इज काइंड ऑफ अवेयर. नाउ द थिंग विद दैट इज व्हाट इट इम्प्लिकेट्स इज कि अभी जैसे कि अगर 25,000 की निफ्टी है, चलिए अभी 24,500 में भी ले लेते हैं, तो आई एम सेइंग कि अभी 25 के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 6.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ये बढ़ जाती है कुछ 19 लाख से 20 लाख रुपए पे. Now, इसका implication are two, as you rightly said, for sellers and buyers. Sellers पे समझते हैं पहले. तो अगर आप लाख रुपए का सपोज अगर आपका 25 का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर आप एक लॉट ऑप्शन सेल करते थे तो सपोज आपको 70,000 रुपए का मार्जिन आता था. ओके. और बहुत सारे लोग जो कि ना खासकर विशु एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते थे और उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं थीटा पूरा खा लूं, कॉल पुट्स दोनों साइड का पूरा थीटा, आई मीन आई शुड हैव द एंटायर, आई शुड मैक्सिमाइज द थीटा which is there in the market time, जो premiums option है. तो लोग क्या करते हैं, at the money options short straddle करते थे, right? and उसको adjust करते थे. तो वहां पे उनका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था, बिकॉज वो थोड़ी बहुत हेक्स तो उसमें आ जाती थी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज 1.25 लाख रुपए का हो जाता था या लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता था. नाउ बिकॉज द लॉट साइज इज गोइंग टू 3 times, the margins to trade now becomes around 2.5 lakh to 3 lakhs. That's like kind of a sizable margin, which change which happens. Point number one. Point number two, for sellers, again, the new regulation, it is saying that there is a 2% additional margin on day of expiry. मतलब अगर आपका वेडनेसडे को पोजीशन खड़ा था तो सपोज आपका 2.5 लाख रुपए के मार्जिन पे खड़ा था, थर्सडे को, विच इज आई एम सेइंग निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, सेम पोजीशन पे आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2%, मतलब अगर सपोज 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है तो 40,000 रुपए और मार्जिन आपको चार्ज होगा 1 लाख पे. तो अगर 2 लाख है तो आप समझ लीजिए कि आपको 80,000 रुपए, तो 2.5 लाख की जगह आपको मार्जिन ऑलमोस्ट 3.5 लाख हो जाएंगे. तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इन द सेंस की, और आई एम सेइंग पीपल हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, एडजस्ट टू इट, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन मार्जिन. तो एक तो जब आप थर्सडे को आके इंट्राडे में लोग शॉर्ट ट्रेड करते हैं तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एक्सपायरी दिन की बढ़ती है. जो लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर रहे थे उनको थोड़ा सा मार्जिन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा लास्ट डे के दिन, अदरवाइज उनका मार्केट में पोजीशन आ जाएगा. तो दैट इज अनदर थिंग व्हिच पीपल हैव टू बी माइंडफुल ऑफ. दैट्स वन. एंड बायर्स के लिए व्हाट्स हैपनिंग इज कि अभी देखिए क्या था, बहुत सारे लोग एक लॉट करते थे, 2 लॉट निफ्टी करते थे, तो मार्जिन अगर आपका सपोज एट द मनी के अंदर 100 रुपए का प्रीमियम भी चल रहा है तो आपने 2,500 रुपए का प्रीमियम दिया, राइट? अब 75 का निफ्टी हो जाएगा तो आपको 7,500 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा. Now, my only request and my hope is that people don't do too much out of the money because of this. Because क्या लोग करते हैं कि लोग ना मार्जिन्स प्रीमियम कम करने के लिए लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ द मनी से 1 स्ट्राइक आगे चले जाते हैं, 2 स्ट्राइक आगे चले जाते हैं, तो मेरा प्रीमियम जो है वो 5,000 7,000 की जगह मेरा 3-4 हज़ार में आ जाएगा.
उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जितना आप आउट द मनी जाते हो उतना आपका डेल्टा कम हो जाता है, और डेल्टा कम हो जाता है तो मतलब इन द सेंस कि बाजार अगर ऊपर भी जाएगा ना तो ऑप्शंस के प्रीमियम उतने नहीं बढ़ेंगे। तो आपका अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव भी कर गया, अगर आपने बहुत आउट द मनी लिया तो 30-30 रुपए का प्रीमियम नहीं मूव करेगा। सो so all I'm saying is that this will lead to a little bit of adjustment in the trading strategies also of traders in the market. You are on mute, Vishu. So sorry for that. I was saying we are getting a lot of comments about speaking in English also. So the problem is we have a lot of people from North India who want Hindi, a lot of people from South India who want English. We'll try to keep it a balanced mix of both so that everybody gets something out of it. I'll try to kind of recap it in English, whatever I understood from what Saurav just explained us, so that you guys are also happy. So the crux of it, as I understood it, was margin requirements are going to be impacted by a lot. For instance, those who are sellers, now, while at one point they were able to sell a pair, both P and C, for around 1,25,000 odd bucks, now they'll require margins of around 3.5 lakhs. Similarly, on the day of expiry also, there will be an extra margin requirement of around 2%, which will further enhance their margin requirements. This stands true also for buyers also, wherein while you could get a lot for 5,000 to 7,000 rupees, you could buy. Now that would become difficult, and the worry is this might induce some people to go out of the money and buy lots which are cheaper. But then, like we say, cheaper is not necessarily better. In fact, it's more risky. So there you have to be a little careful. राइट सो अभी हिंदी के आने लग गए हैं, तो आई होप जो हिंदी वाले हैं आपके लिए सौरभ ने पहले बोला ही था, एज आई सेड वील कीप इट अ बैलेंस मिक्स, स्टे थ्रू आउट विद अस, वी आर वन इंडिया, राइट। सो दिस इज वन, आई थिंक एक ब्रॉड हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पैक्ट, विच वाज कि लॉट साइज चेंज हुए, मार्जिन चेंज हुए, एक्सपायरी के अराउंड हुआ, एंड बायर्स को क्या इम्पैक्ट हुआ। नाउ कैन वी सो what is the benefit that we are offering to ICICI direct clients? How can they manage their positions better after these regulations? Sure. So let me just take that, Vishu. Thank you for the translation. So I also want to build on this particular point, is that, see, in markets, a lot of people were, deploying strategies. As well, right? I mean, so a lot of people, I mean, as along with short straddle, I mean, a lot of people are doing iron condors as well, right? I mean, iron condor is a kind of a decently hedged strategy because you're short selling both call puts and then you're buying wings, so your risk is kind of well protected. Now, just think about it. First of all, the lot size increased, right? Transiting from a 30,000 rupees, today a short channel will be at what, 35,000 rupees. It moves up to around lakh rupees just because of the fact that the lot size has tripled. However, on expiry day, on each leg, there is a 2% additional margin which is required. So I'm saying, the margin requirements for a short straddle may in fact be nearly 1.5 to 2 lakh rupees. Now, and the ROI will remain the same because, ultimately you were, whatever net inflow that you had, that inflow will kind of remain the same. So it moves up, I must say that, because, it's 25 is becoming 75. So the inflow has also increased decently. But having said it, what it entails is more margin deployment, right? Now, the moment we get into more margin deployment, now there are two ways people deploy margins. One is cash margin, and then is securities margin. So now, see, cash is also a cost, right? I mean, the moment the cash is debited from your savings account, I mean, it goes to the pool account of the broker, or in fact, it goes to clearing corporation also. Ultimately, is a cost which got debited from your account. Now, I mean, you may have heard about ratio across markets. People talk about 50% cash margin, that you have to have cash 50%, in the trading account. In ICICI, that's not the case, right? I mean, you could, the rule of SEBI also, let me tell you, is only for broker to exchange, right? I mean, or clearing corporation. Client to broker, there is no 50-50. Clients could put in their securities 100% shares as margin, right? So I'm saying a lot of people have idle shares. They have that in their demat account. Use that as a pledge, get limits on that, and, create margins on it. So I think that is one thing which people will kind of try to think about more when they are trading in the new framework. You're again on mute.
I'm so sorry. I generally mute it out so that people can hear you clearer. Right. So I think another thing that you pointed out, very critical thing is बहुत सारे लोग would be doing, and you would have better stats than me, but जो covered calls वगैरह चलते थे, they might also be facing similar resistances from now on. They'll actually have to increase their holding margins. Is that also the case because lot size has changed? Not really, because the good thing is that nothing has happened in stocks, right? I mean, so the margins in the stocks it's only index which is changed. So for stock options, it remains as is, right? So you can kind of against your portfolio stocks. Let's say I've got ITC trading around 500 rupees, and I think now I'm gonna go to 530 in a hurry. So I will keep on selling my I'm saying ITC stocks. I'm using calls. And if it indeed moves, what people do, Vishu, is that they have shares, right? तो उनके पास डीमैट में शेयर होते हैं और फिर वो डीमैट के जो शेयर थे वो 500 के 530 हो जाएंगे, राइट? तो मेरा वहां पे ऑप्शंस में थोड़ा नुकसान आना स्टार्ट होएगा. तो what people do is instead of taking the mark to market loss, they actually give delivery of the shares. तो वो क्या बोलते हैं कि आप मेरे शेयर्स को लेके ना आप लेके डिलीवर कर दो, आप बेच दो, बिकॉज so उसके लिए there is a process for that. I mean, you have to mark those shares physical delivery, but people use these kind of I'm saying strategies around stock options. So I mean, either on the put side, a lot of people will write puts. See, I'm not recommending what is good, bad at this point of time. I'm just tell you what people do in the markets. Right. Great. We have a question here from Mr. Sameer Ahuja. He has asked, are there any changes in our MTF as well? No, so there are no changes in MTF. Let me first of all say that MTF remains as is. However, there is one change. Sorry to interrupt. I think काफी सारे लोग होंगे जिनको MTF नहीं पता होगा. तो can we start from background कि MTF क्या है and then? Yeah. Okay. So in fact, that's a very good question, actually, Vishu. I must tell you, because what is MTF and what is basically in futures, right? I mean, if I have to contrast between these two products, let's say you are thinking that markets have fallen quite a bit, right? And let's say NTPC is a stock that you like, 390, 395, 400 rupees. You think it's, 420 pe chal raha tha, 430 pe chal raha tha. You think it's a good level, good opportunity that you want to, I'm saying, look at this market right now itself, right? So you want to, let's say, take a better view on a stock. Now, the thing which happens with most of the traders is that most of the people don't sit on cash, right? अभी आज के दिन में से पूछेंगे तो you're fully invested, आपने कहीं और पैसे लगा रखे हैं. So I'm saying you don't sit on cash at this point of time, right? What people do then is that they have shares in their accounts, right? तो वो shares के against limit create करते हैं, and in a way, a cashless way, they'll buy stocks, right? So that, wherein you are not putting your cash, you're using the broker's capital to take a view on a stock or buy a stock, is what basically is MTF, which is margin trade finance. This is a simple, I'm saying, basically funding a stock. Obviously, there's interest cost which gets involved because आप ब्याज अपना पैसा नहीं लगाया तो and we would be among the lowest today to offer that. Now, उसमें कोई change नहीं है, right? I mean, that regulation, nothing has changed in equity segment. However, in fact, I would feel that लोग ज़्यादा MTF में आएंगे because अभी futures के अंदर margin requirements, will move up, right? I mean, the lot size increases, so that when Nifty में move करेगा. But I'm saying, so people 20 लाख रुपए पे मेरे को अगर 2.5-3 लाख रुपए लगेगा, तो rather you may think about going to MTF. And just the last thing I want to add in, the change in regulation also is on the list of collaterals. So अभी क्या था कि 1400 shares थे allowed होते थे जो कि आप pledge कर सकते थे. Now, there is a regulation which has come that repledging cannot happen for, let's say, I'm just giving approximately 500-600 stocks. So a lot of brokers have, started moving that out also of the pledge list. But that, again, is the rule applicable to broker and not to end client. So we haven't done any such changes also on our platform. So again, this is one another. Yeah, I hope I'm audible now. Another interesting question. I'm not sure we'll have the answer right now, but we'll definitely get back to you. The question is, please put some table kind of thing where requirement of expiry, requirement of margin at expiry for one lot of Nifty. So, एक lot of Nifty को कितना margin लगेगा on expiry day? So, I'm not sure if you would have those numbers already with you, but if not, so we can. No, yeah.
Yeah, but I'll tell you, it's pretty simple actually. I think the easiest thing to do is to look at any broker's platform and look at the margin calculator. Every broker on their website would have a margin calculator. And I would also say that along with the margin calculator, you can also look at a basket order. Because you have to look at strategy wise margin. So you're doing a short straddle, जोड़ी बोलते हैं काफी famously, लोग trade करते हैं ऐसे. So I'm saying कि आप उसके अंदर all you have to change is 25, which is the minimum first lot. You have to change it to 75. You know what the new margins are. जो extra 2% का margin है शायद आप नहीं calculate कर पाए, but that's okay. You can just add 2% on the value of the contract. So, right, absolutely. Okay, there was one question, a request to give one share for Diwali, or you can create a basket for Diwali. We want to see how that share will perform from Diwali to Diwali. So we already have our Muhurat picks. If you go to our videos, go to live section, you'll find a recording with Mr. Pankaj Pandey, our head of research. उनके साथ recording है जिसमें कि उन्होंने he has given not 1 but 7 shares for as Muhurat picks. You can of course have a look at them, hear that entire video with rationale out, and you'll find 7. And you can also refer to our Telegram, our Twitter. It has been updated everywhere, but since you are on YouTube, you can find it there. There was about seeing their performance. Unfortunately, we as brokers are not, or as research analysts, we are not allowed to give out performance of research. So that you'll have to do on your own. Sorry, just if I may add one thing, which I would, as a trader, I'm just trying to tell you, and more so this is for option buyers. I think, one of the things which option buyers must not do is, go out of the money to save on premiums, to pay lesser premiums. I think it's just strategy kind of doesn't work because option buyers are anyways against time, and that there is a time value which erodes every second. And that is why you see the profitability of option buyers always gets, I'm saying they're running against the wind, right? And now if people are going to move out of the money, the further the delta is going to reduce. And if the delta of the options reduces, again, I'm telling you, see, there are 3 situations in market in options buying. One is markets moving up, one is market moving down, and the third is market moving sideways. In the 2 scenarios, market remaining sideways, market going down, you feel for sure you will not make money, because I'm just saying if it's a call option. And in market moving up also, the market has to, the rate of increase has to be higher. Now, if you're going further out of the money, the further, you're making it difficult for yourself. So I'm just trying to tell you that if you just, in very basic mathematics also, if you think about it, the percentage of profits and probability of profit comes down to as low as around 20%. So I'm just saying that just because the premiums have increased, or I'm saying the lot size increases, hence the overall requirement premium increases, people should not be cognizant of it. More so during expiries, on expiry day, I'm saying it is much better to buy an in the money call, or in the money put, as it may be, rather than trying to buy a deep OTM, thinking that it'll become a lottery. It doesn't work. Most of the time, it just kind of erodes, makes it zero. So that's just want to add yet. Sure. Absolutely. Perfectly put out. And this is a calculation I think a lot of people miss. So thank you so much for highlighting that. There's one more question 2 people have asked it. One is Mr. Sameer Ahuja, and then there is Mr. GHS as well. They are naming certain specific stocks and asking ki, they want to know the criteria how stocks are selected for MTF. Where is MTF available and where is it not available? I think in fact ICICI Direct offers, if my understanding is correct, ICICI Direct offers MTF on a larger number of stocks compared to the usual number. Can you brief us on that? So around 1400 shares. Around 1400 shares is what we offer MTF at, right? So there's a large basket. NSE allows Group 1 securities to be allowed. Most of the securities we allow. Some of the securities where the volumes are pretty thin is what we don't allow. Some of the shares, at times what happened, Vishu, is that there is a lot of concentration, of a single stock in the types of volumes which is happening on the exchange itself. Which happens on our platform. So hence we want to be a little more careful that we don't want to have, very significant exposure to a particular stock, vis-a-vis what's happening in the market. I can tell you in some of the stocks, maybe 50-60% of the volumes happens on our platform. So we don't want to be very, very significantly concentrated on such stocks. And for such stocks, then if that beyond a particular limit, we would then not allow further exposures, because it creates risk. Because in MTF, as you understand, Vishu, you've seen markets now
over the last 15 days, you will find difficulty in exiting stocks. So hence there are certain prudent risk management measures that we take. But as I said, mostly we allow limits are there. So but there are these situations which we are a little mindful of. Right, absolutely. Okay, we have one more question from Mr. Sanjeev Chaudhary. Is asking, is 2% extra margin applicable for buyers also? Please explain on one lot of 100 premium. Right now, so according to it would become around 7,500. On expiry day, how would it look like? Right. So thank you. This is a good question. So first of all, margins and premium, they are two separate topics, right? Margin is for sellers, premiums are for buyers, right? So buyer has to pay the entire money. Now, very simply put, at the money options trading at 100 rupees, I'm saying because, let's say a few days before to expiry, it is 100 into 25 contracts, which is 2,500 rupees, what is required. Next, the new regulation era, it will become 75 into 100 rupees, which is 7,500 rupees. That's the change which will happen. There is no 2% extra because that's only applicable for option sellers. So it is the option sellers who are trying to eat the theta, and they deploy these short straddle or iron condor strategy, short condors. They are the ones wherein the margin requirements actually, if you ask me, is a little more steeper, almost 100% increase for such trades. Right. Okay. Now we have, I'll go to, I'll just scan through more questions from our audience. Okay. Option plus may is there any plan for leverage facility to be available? No, so there is no, see, the leverage or the entire margining system is defined by the regulator, which is exchanges and SEBI, right? So whatever margin is prescribed, which is, and the regulations have also moved towards upfront margins, right? So I'm saying any margin which is prescribed has to be collected upfront, not under the assumption that the trade may get squared off and hence there is no position, so lesser margin will be charged. So the margins, the regulations are pretty clear that for option selling, it is span-based margin, which is the standard portfolio analysis of risk, which means, what is the risk of the portfolio? I'm saying, is there a hedge? The hedge will reduce the risk of the margins further. Sorry. So Vishu, since this topic has come, let me just tell you what people will do to reduce margins. For an option seller, as this question alludes to, is that, let's say if I'm selling an option, which is, let's say just an at the money options, lakh rupee, 2.5 lakh rupee premium, what people will do, to reduce the margin requirement is go a little out of the money and buy a call option. So the moment you go out of the money and you buy an option, your margin requirements actually shrinks quite considerably because you actually build a hedge on your portfolio. So the hedge, which is the margining system, which is used worldwide, is SPAN. SPAN full fall is standard portfolio analysis of risk. So the moment the risk on the position reduces, which means a call sell has a corresponding call buy, maybe it is deep out of the money, still the margins actually can shrink down by almost 50%. So that I think, will give, will traders will kind of think about such strategies to optimize their margins. Right, absolutely. I think we also have our Spring platform wherein a lot of pre-made strategies are available for users. What would be the impact on margin positions there? I think as of now, 5 lakhs is the margin requirement. Yeah. So whatever, see, I'm saying, everything remains as is. In the sense that the new margin era kicks in. Actually, it's effective. I'm saying it'll be like end of December, by which the newer contracts will start coming in. So everything remains as is. Let's say 3 lakh rupees, we'll take 3 lakh rupees and deploy that. But the point is that because it can trade multiple lots and stuff like that, people will have a little bit of additional margin requirements. Absolutely. So Mr. Sameer Ahuja also has a second follow-up question to his original question on MTF. What if he takes a stock in MTF and later that is removed from the list, that stock? So how would that position be? Yeah.
So there are, there are a couple of things which happens actually, I must tell you. First of all, wherein we decide, not to kind of have further exposure on the stock. In case we decide that decision, then, what we do is we just stop the fresh exposure, right? And existing positions, we don't square off, right? And we keep the existing positions as is. However, if when a client sells the position, that point of time, we may additionally, we don't allow new positions. So I'm saying the existing position remains as is. Incremental positions are not allowed, right? That's point number one. The other thing which at times happens, and it's not very frequent, but at times it does happen, is that the stock is moving from out of MTF, which is, let's say, a trade to trade segment, right? Or let's say particularly classic case of Reliance, where the Reliance was a bonus issue, and the stock could, because it was going X, there was a bonus which would come, and that settlement time would go for a toss. We would not have to allow positions for that particular stock. So in that situation, when it happens like a bonus or when exchange is moving from T to T, that time we have to collect the full margin of the stock, which is 100% margin. We would, wherever possible, we will give clients time, to increase or pay the amount. But those are situations wherein the delivery of the shares have to be taken. In case not, then the positions have to be squared off by the risk management. Right. Okay, I think this we have already. So this question I think we have already discussed, but I'll still spell it out in case I am missing something. Rajiv Kapoor ji ने पूछा है, क्या ऑप्शन बायर को एक्सपायरी को EML मार्जिन देना होगा? I think we have sufficiently discussed. मतलब in the sense मेरा सिंपल आंसर यही है इसका कि मार्जिन जो भी देने पड़ेंगे लोगों को, वो अभी प्रीमियम्स है तो पूरे प्रीमियम देने पड़ेंगे. तो दैट इज अ सिंपल थिंग. नाउ अगर ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है तो आपको 100 रुपए इंटू 75 लॉट 75 क्वांटिटी. अगर वो 50 रुपए का चल रहा है तो 50. तो जो भी प्रीमियम्स हैं ऑप्शन बायर के लिए, वो पूरे के पूरे प्रीमियम देके ही ट्रेड करना पड़ेगा. आप कुछ गैप देके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट. राइट, एब्सोल्युटली. ठीक है. फॉर दोज हु, मेरे को 2-3 क्वेरीज और भी आई थी दिवाली पिक्स के, सो वी हैव पिन्ड द लिंक टू दिस थिंग इन द चैट, बट प्लीज वॉच इट आफ्टर द सेशन क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, कहीं नहीं जा रहा है. दिस इज लाइव. यहाँ पे आप इंटरैक्टिव सेशंस अपने प्लीज पहले कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर मुरुगेसन. ही हैज आस्क्ड क्रूड ऑयल ऑप्शन सेलिंग in this also 2% extra margin will also be required. No, so this is for index equity derivatives, not for this one. So commodity, I mean, we'll have to check back and see whether the commodity rules are changing, but generally this is for equity derivatives. Right. All right, so that gets covered. Okay, then we have a few research questions for that. We'll see. Mr. Jay Thakkar joins us today. Otherwise, of course, we have. No, Jay has just joined in. I think. I think Jay has just moved in. Perfect timing. Hi, good evening, everyone. Hi, Vishu. Hi, Saurav. Apologies for joining late. I was, little bit tired somewhere else, so could not, join in on time. But then, yes, definitely, we can have any questions or any discussions with me as well, so I can take it forward. Absolutely. आपके लिए questions curated हैं. पहला सवाल है कि ये bearishness कब खत्म होगी? Well, I can say that, see, market में last 2 दिन से if we see, then we have seen a good at least recovery from the lower levels. आज निफ्टी ऑटो के कारण we saw some pressure. I mean, मारुति के results इतने कुछ खास आए नहीं, so we saw some pressure in Nifty auto index. Otherwise, if you see banking overall, I mean, banking financials have been one of the sector which is outperforming the markets. I'm about 52,300 के आसपास का closing, which is phenomenal today. 320 to be very precisely saying that. So 51,000 to 52,000 on a bank Nifty is a crucial support that has helped, in fact, Nifty to bounce back today. And अगर आप देखेंगे ना तो we are in the monthly expiry week, Vishu. So यहाँ पे पूरे month में start of the October में, as we do many YouTube live sessions as well, so हमने ये बात करी है कि start of the week में at least until 7th of October जब bottom बना था पहला, ये week का, तब एक shorts बने थे उसके पहले. फिर short covering में Nifty 25,200 300 आई, bank Nifty could bounce to 52,000. Right, and then after we again saw the selling from 25,200 until recent lows of 24,000. तो ये जो 1200 पॉइंट की गिरावट आई ना, इसमें अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स इतना नहीं गिरे जितने लास्ट फॉल में गिरे थे.
राइट, गिरे मगर इतने नहीं गिरे, रिकवर भी हो गए। आपके बैंकिंग फाइनेंशियल्स गिरे नहीं, सो एंड आईटी कुछ खास गिरा नहीं। सो व्हाट हैज हैपेंड इज विशु, ये कुछ 50% ऑफ द मार्केट में करेक्शन आया, 50% में नहीं आया। और अब जहां पे करेक्शन आया भी था वहां पे काफी आई वुड से दैट कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, जहां पे आपको ये वीक में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी। सो दिस बाउंस बैक मेक और कंटिन्यू अंटिल एटलीस्ट थर्सडे। तो तब तक तो आपको ये गिरावट रुकते हुए देखने मिल सकती है जो आपने कहा और पूछा मुझे, होपफुली अंटिल थर्सडे and hopefully prior to the Muhurat trading session आपको थोड़ा बहुत मार्केट हाई लेवल्स पे देखने मिले। Now क्या गोइंग फॉरवर्ड ये आपको कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है? Then I would say वो इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है विशु। frankly for a nifty to give that indication कि कंप्लीट रिवर्सल आ गया, इवन स्मॉल टेक्निकल एक छोटा वेरिएबल अगर आप देख लो दाउ थियरी का भी, तो 25,300 का आपका प्रीवियस हाई निकलेगा ना, तभी वो कंफर्मेशन आपका प्रोबब्ली आया है। सो दैट्स स्टिल फार अवे फ्रॉम हियर। ऑल्सो इफ यू लुक एट अदर थिंग्स विशु, अपार्ट फ्रॉम प्राइस मोमेंटम, तो आप मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखते हैं। सो मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी अगर आप देखें, सो वहां पे भी कोई कंप्लीट रिवर्सल नहीं आया। इट्स जस्ट दैट दे आर ऑल बाउंसिंग बैक फ्रॉम द ओवरसोल्ड टेरिटरी। यहाँ पे पीसीआर काफी ओवरसोल्ड हो गया था, आरएसआई आपका ओवरसोल्ड हो गया था, तो बाउंस बैक हो रहा है। सो बाउंस बैक से रिवर्सल होना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, तो वी नीड टू वेट एंड वॉच। एंड वन थिंग विच आई वुड से दैट अक्टूबर में आपको वोलेटिलिटी देखने मिली, इट माइट आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का कनेक्शन का इशू हुआ है। आई एम श्योर जे विल बी राइट बैक विद अस। राइट, इन द मीन टाइम आई विल जस्ट आस्क सौरभ, क्या आपको लगता है कि इससे ऑप्शन मतलब आई थिंक प्राइसेस पे तो जैसे ही पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा, दैट गेट्स इनटू रिसर्च टेरिटरी अ लिटिल बिट, बट वॉल्यूम्स पे डू यू सी एनी इम्पैक्ट इन द मार्केट? No, so let me just say a couple of things. One is the market depth, right? Whether this, I mean, whether it will have impact on market depth. I think that's an important thing to kind of think about and be wary of that. Because see, if you know the beta, if there is lesser participation, so aapka vibrancy of the order book, reduces, right? So one should be cautious. I think one should use limit orders. In fact, specifically, if you look at newer indices which has come, let's say mid cap Nifty or a Fin Nifty, now is mature, or even Sensex, there are slippages, right? I mean, and price slippages, आप order डालते हैं किस भाव पे execute होता है तो वो तो होने का थोड़ा सा, I mean, one has to be watchful of. Volumes पे देखिए, मतलब I would feel there are, let's just look at day wise, right? Mid cap Nifty होता था मंडे को, राइट? मिड कैप निफ्टी एनएससी का अप्रोक्सीमेटली 15% 20% वॉल्यूम होता है, ज्यादा होता नहीं था। माय सेंस इज लॉट ऑफ मिड कैप निफ्टी ट्रेडर्स विल मूव टुवर्ड्स निफ्टी, बिकॉज ठीक है, उसको न्यू इंडेक्स को समझने में भी समय लगता है। फिन निफ्टी सिमिलरली, आई मीन पीपल विल, दैट्स अराउंड 25-30%, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होएगा, पीपल विल शिफ्ट, राइट? एंड बैंक निफ्टी आई थिंक इज द बिगर वन, बिकॉज दी बैंक निफ्टी जो था, that used to be the heart, मतलब pulse, मतलब धड़कन थी वो actually बैंक निफ्टी, and बैंक निफ्टी was pretty wild, एक बार कैंडल लेगा तो बड़ा कैंडल लेता था। Now that is wherein 3 हफ्ते नहीं रहेगा, चौथे हफ्ते बैंक निफ्टी भी आ जाएगा, राइट? बट 3 हफ्ते बैंक निफ्टी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एक चोट है। मतलब वॉल्यूम्स को, मतलब मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ना चाहिए। या सो दैट्स व्हाट आई वुड से, विशु। Right. And Jay is back with us. आप बीच में we lost your thread. Yeah, one thing you were gonna tell us very important to be noted. Yeah, so one thing important was that next week we have US elections, right? 5th of November. So यहाँ पे तो क्रैकर्स बर्स्ट होंगे काफी, we'll enjoy that, पर वहां पे भी फटाके फूटने वाले हैं बहुत सारे इशू। सो ये देखने वाली बात होगी। वी ऑल नो वेयर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर स्क्यूड एज ऑफ नाउ। वहां के जो एग्जिट पोल सो कॉल्ड है, वहां के जो ट्रेंड है हम देखते हैं, बट एग्जिट पोल अब कितने सही जाते नहीं जाते ना, उस पर मेरे को बात नहीं करनी है, हमने देखा इंडिया में क्या हुआ। सो बट देन ये थोड़ा तो डेटा स्क्यूड है वहां पे टुवर्ड्स ट्रम्प, एंड वो एक चीज है। एंड सेकंड, उसके बाद विशु 20th नवंबर को झारखंड, मतलब नवंबर में वी हैव स्टेट इलेक्शंस झारखंड और महाराष्ट्र के। एंड सी, स्टेट इलेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए।
I mean, I and Saurav were discussing that also once upon a time when Haryana के election थे recently and साथ ही साथ JNK के थे. So we saw that market volatility during that point of time because right now in the center the government has around 240 seats on its own. Okay, कोई भी हो, we are not talking about any particular government, but trying to say is that when you don't have a full majority, what market takes cues from is that कि आपके लिए हर एक state election में thereafter important हो जाता है. Had it been a complete majority, शायद इतना impactful नहीं होता state election, but अब है. So we have this election month entirely November में. तो result खत्म हुए companies के major तब आगे results election के. तो ये दिसंबर में बोलते हैं ना वो शांत हो जाएगा, मार्केट एफआईआई अब चले जाएंगे, एटलीस्ट ये जो सेलिंग प्रेशर में कंटिन्यू. तो आजकल सब लोग पूछ कह रहे हैं कि थमेगा कब एफआईआई का सेलिंग, तो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि भाई इसका सर्टन आंसर क्या पता है, और क्लोज टू सर्टन आंसर दिसंबर में तो थम ही जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग हॉलीडे में जाते हैं. तब तो थम ही जाएगा. तब तक देखिए अगर इलेक्शन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, आई डोंट नो विच वेज, बट कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए तो प्रोबब्ली आपको थोड़ा बहुत मार्केट में और सस्टेनेबिलिटी देखने मिले. बट इजंट इट आल्सो द केस कि ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस के अराउंड वो अपना गिफ्ट शॉपिंग वगैरह के लिए थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है. वो केस में तो दिवाली में भी हम कह सकते हैं. वहां पे मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं होता है, वो स्टार्ट करना चाहिए. आपकी बात सही है, तो थोड़ी शॉपिंग मार्केट में भी हो जाए क्रिसमस के टाइम पे भी मुहूर्त ट्रेडिंग हो सके तो. बट देन यस सी वो इफ दैट्स द केस विशु कि अगर शॉपिंग में जाता है तो इट्स कमिंग बैक टू द इकोनॉमी. इफ आई टॉक वेरी ऑन अ सीरियस नोट कि आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है. कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाता है तो आपका डेफिनेटली कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे, और कॉस्ट भी बढ़ते हैं. सो दैट ओवरऑल कम्स इन दी ओवर अर्निंग्स का फोकस बढ़ जाता है आपका. सो कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होता है. सो इवन इफ दे स्पेंड इट इज गुड. मैं तो कहूंगा स्टॉक बेचकर भी करो तो अच्छा ही है. दूसरे जो स्टॉक खरीदेंगे दूसरे लोग इन एंटीसिपेशन कि भाई ये खरीद रहा है फिजिकल गुड्स, तो उससे शेयर प्राइस तो ऊपर जाएगा. सो कंजम्पशन होना बहुत ही जरूरी है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इशू इज दैट रिसेंटली इतने सारे जो नंबर्स आए, काफी हैवी वेट्स का नंबर आया, हमने देखी एचयूएल वगैरह के भी नंबर्स आ गए, एंड मेनी स्टॉक्स आर हैमर्ड, दोज हु हैव नॉट परफॉर्म वेल, राइट. तो आप देखिए कि कंजम्पशन नेस्ले में पिटाई हुई, एचयूएल में पिटाई हुई, कहीं ना कहीं कंजम्पशन को लेके क्वेश्चन रेज हुआ, राइट. सो आई मीन अगर एफएमसीजी में इस तरह का फॉल आ सकता है, सो एंड इन्फ्लेशन कुछ हाई रेट पे है नहीं. यहाँ पे तो हम रेट कट की बात कर रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन अभी अच्छे लेवल्स पर आ गया है, नीचे है, हम रेट कट करने चाहिए यहाँ से. तो जब इन्फ्लेशन का मुद्दा है नहीं तो कंजम्पशन में इतना कट क्यों है? सो कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट हमने देखा मारुति के भी नंबर्स इतने नहीं, ऑटो सेक्टर में इतने देखने नहीं मिले. सो समवेयर इफ दिस डजंट पिक अप फ्रॉम हियर ऑन, अब ये फेस्टिव सीजन हमारे लिए ये क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला जो क्वार्टर है, आई जस्ट होप दैट कि हमारे ये क्वार्टरली नंबर्स सारे कंपनीज के जब नेक्स्ट Q3 रिजल्ट आएंगे उसमें अच्छे आए, सो दैट कैन हेल्प कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड. अदरवाइज क्या हो जाएगा कि बैक टू बैक जब 2 क्वार्टर नेगेटिव होता है ना विशु, तब फंडामेंटली भी चीजें थोड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि 2 क्वार्टर अर्निंग्स नेगेटिव आए, राइट. सो काफी लोगों के तो एग्जिट की स्ट्रेटेजी होती है फंडामेंटली कि 2-3 क्वार्टर अगर कंटिन्यूसली में ग्रोथ नहीं दिख रहा तो प्रोबब्ली आप थोड़ा रिड्यूस करें, ओवरवेट से थोड़ा न्यूट्रल हो जाए. सो ये फर्स्ट क्वार्टर था, आई होप दिस वाज जस्ट लाइक एन एबरेशन, थोड़ा बहुत हो गया नॉइज ऐसा कि ठीक है थोड़ा कंजम्पशन नीचे आ गया. अब यहाँ से दूसरा क्वार्टर Q3 वो खराब नहीं आना चाहिए. एब्सोल्युटली. ठीक है. एक गेटिंग बैक टू द हम लोगों का आज का जो रेगुलेशंस के अराउंड हमारा डिस्कशन है, उसमें एक क्वेश्चन इज रिजर्व्ड फॉर यू व्हिच इज कि डू यू सी एनी इंपैक्ट ऑन द ऑप्शन प्रीमियम्स बिकॉज ऑफ दीस चेंजेस? बिकॉज अब जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, मार्जिन कहीं जो लोग पहले 1.5 लाख में जोड़ी बेच रहे थे अब 3.5 लाख, सौरभ ने हमें एक्सप्लेन किया. हम लोगों ने ये भी देखा कि 2% मार्जिन एक्सपायरी डे पे एक्स्ट्रा चाहिए होगा हर जगह पे. तो डू यू सी एनी इंपैक्ट ऑन द ऑप्शन प्राइसेस? सी इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ. पहले तो कि विशु लोगों को वीकली ऑप्शंस जो ट्रेड करने की अभी काफी समय से आदत है. सो वीकली ऑप्शंस में आपका जो रिलेटिवली थीटा होता है ना एज कंपेयर टू मंथली ऑप्शंस, वो कम होता है, राइट. तो एनी विच वेज आपके प्रीमियम्स वीकली ऑप्शंस के रिलेटिव टू मंथली ऑप्शंस कम होते हैं. तो आप जोड़ी की बात कर लीजिए, चाहे एटीएम हो या ओटीएम, राइट. वो प्रीमियम्स कम होने के कारण आपकी वो कॉस्ट प्रीमियम आपको कम ही दिखता है. मंथली के ज्यादा होता है पर वीकली की ज्यादा लोगों को आदत होती है, तो उसमें प्रीमियम हमेशा कम होता है. अब वीकली हट गया,
जैसे सौरभ भी बात कर रहे थे अभी कि बैंक निफ्टी अब मंथली हो जाएगा, जहाँ पे वीकली में इतना वाइल्ड हो रहा था मूवमेंट। अब डायरेक्ट जब मंथली में आप जोड़ी बनाने जाओगे स्टार्ट में, तो आप क्या आप बाय करने जाओगे सेल, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीमियम हाई दिखने वाला है, बिकॉज दैट्स ओनली मंथली। सो थियोरेटिकली आपका वीकली हट गया तो आपका पूरा मंथ का थीटा आ गया, सो ऑब्वियसली आपके प्रीमियम्स बढ़ गए ऐसे ही, बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस प्राइसिंग। सेकेंड पॉइंट कि आपके प्रीमियम्स इसीलिए बढ़ सकते हैं, रीजन बीइंग कि आपकी वोलेटिलिटी जो है, जो इतने टाइम से नीचे रही है, हमें लास्ट अगर आप 2-3 साल से देखिए तो हम लो आईवी रिजीम में भी रहे हैं विशु, राइट। आईवीज की तो हम यूट्यूब लाइव सेशन में बात करते हैं, लो आईवी रिजीम में भी रहे जब मार्केट कंफर्टेबली ऊपर जा रहा है और आईवीज नीचे 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 रहे थे, बिकॉज इट वाज वेरी इजी टू मैनेज द वीकली ऑप्शन, राइट। अब मंथली आ गया, सो दिस विल इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ आईवीज, राइट। एंड जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े, मार्जिन्स के आपने एक बात कही, सो मार्जिन्स हो गया, आईवीज हो गई, और वीकली से हटकर मंथली हो गया, तो ये सारे कारण के कारण जो भी इंडेक्स का वीकली ऑप्शन नहीं है ना, उसके प्रीमियम्स रिलेटिव टू वीकली ऑप्शंस जो है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स रहेंगे, तो उनमें आपको इतना नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब उसमें 5% के आसपास का शायद आपको फर्क पड़े, बट जो मंथली में कन्वर्ट हो गए उसमें थोड़ा आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने मिलेगा। और मुझे एक फियर है कि अब तक होता क्या था विशु, कि मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, जैसे सौरभ बात भी कर रहे थे कि हर सोमवार को एटलीस्ट 40-50% कॉन्ट्रीब्यूशन मिड कैप निफ्टी में आ जाता था। सो एवरी डे वी सी 400 लाख करोड़ टू 500 लाख करोड़ का वॉल्यूम्स, इन ऑप्शंस, राइट, इंडेक्स ऑप्शंस। अब ये वही पैसा रोज सोम से लेकर शुक्रवार तक घूमता था, राइट ना, सेम मनी, जो सेलिंग डी, बिकॉज जीरो डीटी बोलते हैं ना, जीरो डे टू एक्सपायरी, उसमें काफी वॉल्यूम्स आते थे, सेबी की भी रिपोर्ट में था वो 2.5 से 3.5 में, एंड ऑल दैट, 75% वॉल्यूम हो जाता था। अब क्या हो गया विशु के वो पैसा आपका शिफ्ट होगा थोड़ा निफ्टी में, थोड़ा सेंसेक्स में, और बाकी का पैसा आपका मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होगा, प्रोबब्ली मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में। तो आई वांट टू सी विच आई थिंक कि मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा, जितना वॉल्यूम अभी तक हो भी रहा था ना, समझो हर सोमवार को आपका मिड कैप निफ्टी में 50% वॉल्यूम हो जाता था, 150-200 लाख करोड़ का, तो 4 हफ्ते तक आपका हो गया लगभग 600 लाख करोड़ का। अब तो बचा आपका लास्ट वीक ही, जो मंथली है, जो वही वीकली है, तो ये 450 लाख करोड़ का वॉल्यूम आपको लगता है कि मंथली एक्सपायरी में अब डे 1 से होगा? आई डाउट, राइट। इसके कारण थोड़ा वॉल्यूम्स में ड्रॉप होगा और शिफ्ट भी होगा निफ्टी और सेंसेक्स में। सी इसमें जो एक जोकर इन द पैक है ना, वो सेंसेक्स निकला, उसके लिए काफी विन विन हो गया विशु, बिकॉज आज निफ्टी के टोटल कितने प्रोडक्ट थे? बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये 4 प्रोडक्ट, अब 4 में से रह गया खाली एक। बैंक निफ्टी के सेंसेक्स के 2 ही थे, उसमें से रह गया एक, तो निफ्टी के एनएससी के 3 बंद हुए, सेंसेक्स के एक, बीएससी के एक बंद हुआ, तो ये 3 का हिट लगा ना उसमें, मेजर बैंक निफ्टी का, आई थिंक दैट मे शिफ्ट टू सेंसेक्स, राइट। तो जोकर इन द पैक हो गया, उसके लिए काफी बेनिफिट हो गया, तो हमें प्रोबब्ली शायद इसीलिए बीएससी के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग और रिकमेंडिंग, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग, राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, सौरभ आपके लिए की सवाल है, इन केस ऑफ शॉर्ट इन मार्जिन कैन वी सेल आवर स्टॉक टू ऐड बैलेंस इन द मार्जिन? Yeah, basically what it is called is pledging of shares, right? मतलब in the sense that let's say I've got some 8 lakh rupees in my demat account. तो what I do is, and what people do it, कि वो 8 लाख रुपए का pledge create कर देते हैं ब्रोकर के नाम पे, एंड एनएससी के हेयर कट्स होते हैं, मतलब लेट्स से आईटीसी का 9% का हेयर कट होगा, तो उसका लेट्स से 91% का लिमिट बन जाता है। तो लेट्स से 8 लाख अज्यूम कर रहा हूँ 10% हेयर कट होता है, तो 7,20,000 रुपीज का हेयर कट क्लाइंट के अकाउंट में इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है, फॉर फर्दर ट्रेड एक्सपोजर, राइट। तो वो लोग जनरली ऑप्शन सेलर्स जो है, मैं खासकर बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर्स को मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत हर समय रही है, और अब और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो फिर वो अपना शेयर्स यूज करेंगे, कैश शेयर्स यूज करेंगे, और उसको प्लेज करके उसके केस लिमिट लेंगे। और हम जैसे 100% शेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो हम कैश नहीं मांगते कस्टमर से, बिकॉज कैश इज अ कॉस्ट, राइट। तो वो हम नहीं मांगते हैं। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनको तो ब्याज भी चार्ज नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ ऑफरिंग है जहाँ पे कि आप ओवरराइट भी पोजीशन होल्ड करते हो तो भी आपको ब्याज नहीं चार्ज करता, आप शेयर्स पे एग्रेस करते हो तो। So that way, I think the need for shares will increase. That would I would agree with you. Absolutely. Okay, next question जय आपके लिए है कि ये जो चेंजेस हैं थोड़ा सा एक डिस्प्रपोर्शनेटली मे बी सेलर्स को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होता है। तो डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस थोड़े सेलर्स का पार्टिसिपेशन कम होगा एंड दिस विल लीड टू हायर प्रीमियम्स?
सी सेलर्स का पार्टिसिपेशन, जो सेलर्स होते हैं विशु, पहले तो मैं ये मानता हूँ, सी किस तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम पहले ये समझते हैं। तो एक है रिटेल पार्टिसिपेंट्स, एक होते हैं आपके प्रोप्राइटरी डेस्क के पार्टिसिपेंट्स, और आप कह दीजिए इंस्टीट्यूशंस, सो प्रॉप स्लैश इंस्टीट्यूशंस, और एक हो गया रिटेल। अब काफी जो रिटेल के जो डेटा है, जहां तक मैं समझा हूँ, as far as I have understood the SEBI's report and overall findings, पूरा data, and as far as we also do at a company organization level, moreover, Saurav and team does it more, but we get more insights from them and SEBI report and all of that, जो market behavior है participants का। So retail का जो behavior है ना विशु, वो लोग का बाइंग की तरफ ज्यादा है, ऑप्शंस बाइंग की तरफ, because see, we should understand one thing कि 66% तो एनी विच वे सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। सो अगर रिटेल लूज कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडर लूज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? बिकॉज वो 33% के ब्रैकेट में इसीलिए कर रहा है ना, जो 33% इज बाइंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, शायद वो वहीं पे फॉल कर रहे हैं, हेंस वो नंबर ज्यादा है और पीपल मेकिंग लॉसेस इन ऑप्शंस। अगर वो 66% वाले ब्रैकेट में तो पैसे कमाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है काफी ऑप्शंस। सो वो अंडरस्टैंडिंग से लॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस बाइंग की तरफ ज्यादा है रिटेल इन्वेस्टर, राइट? तो उनको ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। इंपैक्टफुल कहां पे? ये भाई डेफिनेटली प्रीमियम्स बढ़ेंगे। सो जहां पे वो 5 लॉट ले पाते थे और ज्यादा ट्रेडिंग कर पाते थे, वॉल्यूम कर पाते थे, शायद वो 1-2 लॉट कर पाए, क्योंकि आपके वॉल्यूम्स, आपका लॉट साइज भी बढ़ गया है। तो मार्जिन तो बड़े हैं, साथ में लॉट साइज भी बड़ा है, दो चीजें। सो आज अगर समझो मैं ही रिटेल इन्वेस्टर हूँ, राइट, मैं अगर 2:30 बजे आकर के कहीं पे भी आकर मैं आज 20 रुपए में, 30 रुपए में कॉल ऑप्शन ले लेता था, 25 का लॉट साइज था, कि 15 का लॉट साइज था विशु, तो 400-500 रुपए लगते थे, राइट? अब वो 500 के इंटू 3 टाइम्स हो गए। अगर निफ्टी में आप करना चाहो तो 1500 लग गए। तो जहां मैं 1500 में पहले 3 लॉट लेता था, तो वॉल्यूम वो हिसाब से मैं ज्यादा चर्निंग करता था, एक लिया बेचा, लिया बेचा, अब शायद मैं एक ही ले पा रहा हूँ, राइट? सो दैट बायर्स को थोड़ा इंपैक्ट कर सके। सेलर्स को इंपैक्ट कहां पे कर रहा है पता है? डेफिनेटली इंक्रीज इन मार्जिन्स। सी सेलर्स जो होते हैं विशु, वो जनरली एक लॉट नहीं बेचते, वैसे भी 5, 10, 15, 20 ऐसे ही बेचते हैं। अगर आप मैं प्रॉप और इंस्टीट्यूशन की बात करो तो एक लॉट थोड़ी बेचते हो, वो तो ज्यादा ही क्वांटिटी बेचते हैं। अभी उनके लिए तो क्या हो गया ना कि इंटू 3 करना है, तो पहले अगर वो 30 लॉट बेच रहे थे, अब 10 लॉट बेचेंगे, क्वांटिटी तो उतनी होगी और वॉल्यूम उतना ही होगा, राइट? उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो गया है कि कैलेंडर स्प्रेड आपने बंद कर दिया। सो वहां पे जो मार्जिन बेनिफिट थी ना, वो आपने ले ली प्रॉप इंस्टीट्यूशन से। अब वो ले लेने के कारण वो जो ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी कर पाते थे because with a less amount, that will not be possible. If they are doing calendar spread for a profit, you do calendar spread, but then you have to bring that margin also. Second is आपका एक्सपायरी डे पे जो मार्जिन बढ़ा दिया है, ELM मार्जिन वगैरह हम जो बोले थे, सो डेफिनेटली वो भी इम्पैक्ट करेगा। So these things will be impactful more for the option sellers is what I understand, and I understand also कि market participants overall अगर आप समझिए 40-50 लाख टोटल ऑप्शन ट्रेडर्स है डे के ओवरऑल NSE में BSE मिलाकर मार्केट में, उसमें से अगर 30-35 लाख अगर रिटेल ट्रेडर्स है और बाकी के सारे आपके इंस्टीट्यूशन है, सो 30 लाख जो रिटेल ट्रेडर्स अगर ऑप्शन में रोज ट्रेड कर रहे हैं, डीमैट के अकाउंट में अगर आप देखें 16 करोड़ के हिसाब से तो कुछ नहीं, 2% ही हुआ है। तो उसमें विश्व 30 लाख में से मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट 5-7 लाख, शायद ये मेरा मानना है, सौरभ को ज्यादा पता होगा, ही रीड्स मोर डेटा लाइक दिस, बट मैं बताऊंगा 5-7 लाख शायद आपके ऑप्शन सेलर रहेंगे, बाकी 24-25 लाख तो बाहर ही होंगे। तो ज्यादा इंपैक्टफुल ये रिटेल को हुआ है, रिटेल को नहीं हुआ है, बायर्स को नहीं हुआ है, आई एम टू से सेलर्स को हुआ है। ये तो बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। और बायर्स को खाली एक ही इंपैक्ट हुआ है, जो मैंने कहा, ये जो राइज इन प्रीमियम होगा उसके कारण थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल। एब्सोल्युटली राइट। सौरभ, आपके लिए सवाल है कि अभी ये सब जो चल रहा है रेगुलेटरी चेंज, इसके चलते आईसीआईसीआई डायरेक्ट अपने ब्रोकरेज प्राइसेस तो नहीं बढ़ाने वाला है? Let me just say a couple of things here. So first of all, अभी जो होगा ना, उसका एक बेनिफिट तो ये डेफिनेटली होगा कि अगर आप एक लॉट कर रहे थे, जैसे 25 निफ्टी कर रहे थे, तो 25 निफ्टी का 2 ब्रोकरेज प्लान होते हैं। एक तो 20 रुपए पर ऑर्डर होता है, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, 20 रुपए, मतलब नॉट रियली लुकिंग एट 20 रुपए बेकिंग। तो अगर आप 25 करिए, आप 75 करिए, दोनों जगह आपको 20 रुपए लगा, तो एक्चुअली आपका यूनिट लेवल कॉस्ट तो बहुत कम हो गया। इवन जहां पर लॉट था, वहां पे भी अगर आप देखें तो एक लॉट का भी 25 रुपए, 7 रुपए लग रहा था हमारा लोएस्ट पे। और अगर आप 75 करेंगे तो एक्चुअली 21 रुपए की जगह वो 7 रुपए लगेगा, राइट? तो वहां पे तो इनफैक्ट 1/3 हो जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ब्रोकरेज कम हो जा रही है। तो वहां पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, बट लॉट लेवल पे अगर आप ऑर्डर लेवल पे जाएं, जहाँ पे 20 रुपए फ्लैट लग रहा था, वी डोंट हैव एनी थॉट्स देयर टू चेंज
anything. And just to also add, मैं बस फिर से एक बात बोल रहा हूँ, अभी क्या होगा, अभी because of higher margin requirements, cash requirements of the customer goes, and in our case, दो जगह कैश लगता है. एक तो जो आपने ट्रेड के लिए डाल दिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, दूसरा होता है जो आप मार्क टू मार्केट के लिए कैश रखते हो. इन बोथ केसेस, अगर आपने मार्क टू मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रख भी रखा है ना, तो भी आपको ब्याज मिलता है हमारे केस में, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ब्रोकर पूल अकाउंट कंसेप्ट जहाँ पे हम पैसा लेके अपने अकाउंट में ले लेते हैं. हम क्लाइंट के अकाउंट में नहीं रहता है, क्लाइंट ही को 3.5% का ब्याज मिलता है उसके ऊपर. एंड द सेकंड इज दैट जो आपने एक्सचेंज में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पैसा दिया, वहां पे आप कैश मत दीजिए, आप शेयर दे दीजिए और कैश को आप एफडी बना दीजिए 7% का. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट it kind of works, this new change, if you ask me, really works in the interest of customers in terms of cost of trading. What Saurav is trying to say is that जो SEBI ने अपने पेपर में जो ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर अंदर आफ्टर जो फाइनल आया उसमें लिखा भी था 3-in-1 अकाउंट. So that is meant for that. I think Saurav, if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, Feb 2025 तक it is mandatory for everyone to have this kind of provision which ICICI already has of 3-in-1 account, which makes very easier for customers to not lose out on their cash holdings or maybe cash remaining balances. बहुत easy हो जाता है. Yeah, I hope it get implemented in the way the design is and in true spirit, because अभी सबसे बड़ा पैसा जो लोग कमा रहे हैं वो ब्रोकरेज से ज्यादा तो कस्टमर के कैश के ऊपर कमा रहे हैं, बिकॉज ब्रोकर पूल में आपने पैसा दे दिया तो आप मतलब एज बैंकर्स भी अंडरस्टैंड राइट कि कैश हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू. तो व्हाट जय आप जो बोल रहे हैं, अगर आई होप इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट, माय सेंस इज इट मे नॉट बी, बिकॉज वो शायद कैश में हो, एफएनओ वगैरह में होना. एंड आई थिंक लोगों ने पढ़ा है सेबी रिपोर्ट, स्पोक अबाउट 2 lakh crores in brokers pool account. It is a sizable money, right? अभी आप देखिए दिवाली के दिन अभी थर्सडे फ्राइडे आएगा, अभी कोई फ्राइडे तो ट्रेड करेंगे नहीं, बट फ्राइडे को भी पैसा ब्रोकर के अकाउंट में, सैटरडे को भी पैसा ब्रोकर के अकाउंट में, संडे को भी पैसा ब्रोकर के अकाउंट में. आप देखिए 3 दिन का ब्याज ही आप देख लेंगे अगर 5-7 लाख रुपए में, तो उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज कस्टमर नहीं देते होंगे जितना ब्याज का पैसा चला जाता है. Absolutely. I mean that is what I was coming to, कि वो बहुत ही एक बेनिफिशियल मतलब कस्टमर्स के और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हित में ये सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है. आई मीन इफ इट गेट्स इंप्लीमेंटेड एज सौरव सेड इन राइटली वे, सो क्या हो जाता है कि आपको वही दिन पैसा मिल गया, राइट? जो आई थिंक वो सौरव इफ आई थिंक देयर आर फ्यू स्टॉक्स इन विच ऐसा किया था कि 80% पहले आ जाता था, 20% बाकी रह जाता था, फिर जीरो सेटलमेंट आई थिंक 25-30 स्टॉक्स के साथ स्टार्ट किया था. बट अभी तो विद दिस काइंड ऑफ अ मूव आई थिंक वो सभी में हो जाएगा. या मतलब करेक्ट. सो आई एम EATM हमारे केस में तो देखिए ना, मतलब एज यू आर अवेयर जय एंड विशु, मतलब अगर आप थर्सडे का पैसा है कल का, और मतलब हम दिवाली के 3 दिन के बाद भी पैसा नहीं देने वाले क्लाइंट को, हम तो कल ही क्लाइंट के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे. तो यू आर राइट कि हम तो एनीवेज 5 मिनट के सेटलमेंट में हैं अभी भी. इंडिया इज स्टिल एट T+1 सेटलमेंट. होपफुली दैट चेंज हैपेंस. Absolutely. एक फाइनल क्वेरी है which says कि मतलब GSSG को क्लैरिफाई वंस एंड फॉर ऑल करना है. इट मींस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ we will see expiry each and every day again. Is that correct? कि मतलब अभी weekly हर रोज होती है? I think so. Yes, that's what I understand, because monthly expiry है सारे contracts की. So Monday को Nifty expire करेगा, Tuesday को Monday को mid cap Nifty करेगा. So वही होगा, Wednesday को बैंक निफ्टी करेगा. So that is the way we understand it. कुछ changes होंगे तो पता चलेंगे. But at this point, NSE ने जो सौरव सर्कुलर निकाला है वो हिसाब से तो यही है. मतलब NSE ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो यही है कि we are going to keep Nifty as a last week expiry. मतलब basically last week तो फिर से लोग I'm saying what they were getting, but let's see. अगर कुछ changes होता है तो we'll have to come back. Absolutely. And with that, I think हमारा time अभी के लिए हो गया है खत्म, but we'll be back with more such stuff. Please do put down any more questions that you have. हम लोग address करने की कोशिश करेंगे आगे भी. Till then, a very happy Diwali. We'll see you tomorrow itself. वैसे बहुत दूर की दिवाली नहीं, और इनफैक्ट आज रात Twitter Spaces पे भी जय और राज हमारे साथ होंगे. हम लोग मार्केट सिनेरियो से बातें करेंगे. So do join us there as well. Once again, thank you so much for watching us. Thank you Saurav and Jay for your time and helping us to understand these regulatory changes. Thank you so much, and wish you all a very, very happy Diwali from us, all of us, and ICICI Securities. Thank you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.